यस। सो ये चैप्टर जो है ग्रेविटेशन चैप्टर आपने ऑलरेडी मुझे लगता है कि रेगुलर लेवल पे किया है, ठीक है नहीं? तो उसके ऊपर के जो उसके ऊपर शायद टेस्ट बाकी है। यस, सो यू कैन सी। बट जो बेसिक कंसेप्ट्स है ग्रेविटेशन के अंदर, कौन से बेसिक कंसेप्ट्स है वो आपको ऑलरेडी सभी पता है। और उसके बेसिस पे अभी एमसीक्यूज को उसको किस तरह से मोल्ड करने का या उन कंसेप्ट्स को एमसीक्यूज लेवल पे कैसे लेके जाने का या सॉल्व करने का के लिए यूज करने का, तो वो हम अभी आज के लेक्चर में देखेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट द ग्रेविटेशन। ओके, सो gravitation. Yes, this chapter is actually you are studying from ninth standard, I think so. ठीक है, नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी तुमको कुछ पार्ट उसका था ऑलरेडी, और टेंथ स्टैंडर्ड में भी उसका एक थोड़ा ब्रीफ रिवीजन भी था, और 11th स्टैंडर्ड में अभी वो तो पूरा ही आपने उसको स्टडी किया है ऑलरेडी। तो देखेंगे ठीक से फटाफट कि क्या क्या बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक फॉर्मूले उसके अंदर है। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। When we talk about the gravitation, we can say that the Newton's law of gravitation is the basic fundamental law in the gravitation. तो ये लॉ कहता है कि अगर कोई भी दो पार्टिकल्स जो m1 और m2 मास के है, और वो सपोज अगर स्पेस में r इतने डिस्टेंस पे अगर सेपरेटेड है, उनके बीच में डिस्टेंस है r इतना है, तो उस केस में होता है ऐसा ना कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एग्जिस्ट करता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हम कोई भी दो पत्थर, सपोज एक पत्थर 1 किलोग्राम का और दूसरा पत्थर सपोज 5 किलोग्राम का, ऐसे अगर दो पत्थर हम कुछ डिस्टेंस पे, मान लो कि 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, मतलब 1 फुट पे रखेंगे, तो उनके बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। ये फर्स्ट वाला जो पत्थर है वो दूसरे पत्थर को खींचेगा अपनी तरफ, और ये जो दूसरा वाला पत्थर है वो भी पहले वाले पत्थर को इस तरफ खींचेगा और एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से ये दोनों पत्थर क्या होने चाहिए, आपस में जाके टकराने चाहिए। लेकिन ऐसा स्पेस में प्रैक्टिकल में ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। उसका रीजन ये है कि फोर्स इज ऑलरेडी देयर, बट दिस फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मास का प्रोडक्ट और उनके डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के रेशियो के ऊपर ये फोर्स डिपेंड करता है। और उससे भी आगे जाके जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो ये कांस्टेंट जो है वो जी, जो कि बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है, इतना छोटा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे होता है ऐसा ना कि अगर सपोज हमने 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम का अगर मास रखा, तो जी का वैल्यू जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ऑब्वियसली unit will be Newton meter square per kilogram square. So this is actually going to be the formula for finding the G. G का जो वैल्यू है तो वो हमको इस तरह से मिलता है। बिल्कुल, अभी इसमें सोचने जैसी बात यह है कि G का वैल्यू अगर 10⁻⁻11 के रेंज में अगर है, तो उस केस में क्या होगा, अगर इतना छोटा G का वैल्यू हो तो उसमें होगा ऐसा कि अगर 1-1 किलोग्राम के भी अगर हम दो मासेस अगर यहाँ पे डाल देंगे और 1 मीटर पे भी अगर रखेंगे उनको, तो भी देखो यहाँ पे m1 becomes 1, m2 becomes 1 and r also becomes 1. सो ये तीनों 1 बन भी जाए तो भी फोर्स कितना आएगा उनके बीच में, दो मासेस के बीच में, तो वो फोर्स बनेगा g के बराबर, मतलब ही 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन के बराबर।
अब ये इतना छोटा फोर्स है जो कुछ काम का ही नहीं है, और इसीलिए हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल में ऐसा कभी होता नहीं है कि दो पत्थर हमने आमने सामने 1 मीटर या आधे मीटर डिस्टेंस पे रखे और वो जाके चिपक गए, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जाके वो चिपक गए। ऐसा कभी होता नहीं है प्रैक्टिकल में। उसका रीजन ये है कि उसका रीजन ये नहीं है कि देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स एट ऑल। Gravitational force is already there, but the value of this force is so small that this force will be neglected. This force cannot produce any acceleration in the two bodies, which are massive here, and that's why this we cannot find this gravitational law, Newton's law of gravitation, to be working in the nature. But when the product of mass becomes very large, like suppose if we consider one of the masses m1 to be the earth, mass of earth, and suppose m2 is suppose the mass of moon, तो ये suppose moon है, तो moon और earth के बीच में जो distance है वो भले बहुत ज्यादा है, लेकिन ये mass जो है वो mass भी तो बहुत ज्यादा है, और mass ज्यादा होने के कारण यहाँ पे product of mass बहुत ज्यादा बन जाता है, और इसकी वजह से ये distance जो भी है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ significant force अर्थ की वजह से मून के ऊपर अप्लाई होता है, और उसकी वजह से ही मून जो है वो अर्थ के आसपास घूमता रहता है सर्कुलर ऑर्बिट में। तो ये हम समझ सकते हैं। सो रिमेंबर करेक्टली दैट मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। अभी इसमें एक और समझने से ऐसी बात है, इवन सन ऑल्सो exerts the same force or some force on all the planets और अर्थ ऑल्सो। तो ये सपोज सन है, तो सन भी अर्थ के ऊपर, ना सिर्फ अर्थ के ऊपर बल्कि सभी प्लैनेट्स के ऊपर भी एक फोर्स एग्जर्ट करता है। सो सन की वजह से जो अर्थ के ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली द अर्थ कैन रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर मतलब अर्थ और प्लानिटरी सिस्टम के अंदर तो सन के आसपास जितने भी सारे प्लैनेट्स घूमते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही घूमते हैं। इसमें और एक समझने जैसी बात यह है कि न्यूटन्स लॉ टेल्स अस सिंपली दैट द फोर्स बिटवीन द टू प्लैनेट्स और बिटवीन द टू मासेस, बराबर। तो इसका मतलब यह हुआ कि द फोर्स व्हाटएवर फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस मास m2 ड्यू टू m1 will be, suppose we call it as f21, okay, so the same force will be acting on the mass m1 due to m2। तो मास m1 के ऊपर भी उतना ही फोर्स एक्ट हो रहा होगा। if we can call it as f12, then we say that this f12 is going to be same as f21 in magnitude, only difference is the direction। तो डायरेक्शन में ही सिर्फ डिफरेंस है। तो इसमें होता ऐसा है कि जितने फोर्स से पहला मास पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को खींचता है उतने ही फोर्स से दूसरा पार्टिकल पहले वाले पार्टिकल को खींचता है। तो फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज गोइंग टू बी द सेम। सो इन द सेम वे हियर, जिस फोर्स के साथ अर्थ मून को खींचता है इस डायरेक्शन में, तो उसी फोर्स के साथ मून भी अर्थ को खींचता है इस डायरेक्शन में, लेकिन घूमता मून है, अर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि मून का मास बहुत छोटा है और इसलिए मून जो है वो अर्थ के आसपास घूमता है, ना कि अर्थ मून के आसपास घूमता है। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट तो होता है मून की वजह से, लेकिन दैट फोर्स इज अनेबल टू प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन इन द अर्थ व्हिच विल पुल इट टुवर्ड्स इटसेल्फ। बट मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके इफेक्ट्स अर्थ के ऊपर होते हैं, जो हमको पता है ऑलरेडी कि जो समंदर के अंदर जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं तो वो उसका रीजन जो है वो मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही है। मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ही समंदर के अंदर जो है हर 15 दिन के बाद ज्वार भाटा बोलते हैं उसको, ज्वार भाटा आता है। मतलब हर 15 दिन के बाद पानी जो है बाउंड्री क्रॉस करके थोड़ा एक आधा किलोमीटर आगे आ जाता है और हर 15 दिन के बाद फिर वो अंदर चला जाता है। तो दैट इज द हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स वी हैव लर्नड इन द लोअर स्टैंडर्ड्स, एंड दैट इज द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून हियर। तो मून का ग्रेविटेशनल इफेक्ट अर्थ के ऊपर जो गिरता है तो उसकी वजह से ये सब होता है। So that means every planet has its own gravitational capacity. Not only Earth, not only Sun, but all the planets and all the subplanets. उससे भी आगे जाके every particle of matter has its own tendency to attract another particle towards itself, and that is called as the gravitation. Remember.
सो ग्रेविटेशन क्या है? जिस पार्टिकल को मास है, ठीक है, भले वो चाहे कितना भी छोटा है कितना भी बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अदर पार्टिकल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ with some force which is directly depending upon the product of the masses of both of the particles which are involved and inversely proportional to the square of distance between the two particles which are involved here. So this is nothing but the Newton's law of gravitation. It exists in every pair of particles in the universe. तो यूनिवर्स के अंदर के हर पेयर के अंदर, हर पार्टिकल के पेयर के अंदर ये फोर्स एग्जर्ट है, एग्जिस्ट करता है. सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि कोई कोई पार्टिकल्स का मास ज्यादा होने की वजह से वो हमको नजर आता है, उसके इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, लेकिन कोई कोई पार्टिकल्स का मास कम होने की वजह से उसके जो इफेक्ट्स है वो हमको दिखाई नहीं देते. क्लियरली हमको ये पता नहीं चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं, और हम समझते हैं कि नहीं है, बट इट इज ऑलरेडी देयर. ओके, सो दिस इज बेसिकली द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. रिमेंबर, इफ द टू पार्टिकल्स जस्ट टच ईच अदर, अगर दो पार्टिकल्स जिनका मास मान लो m1 और m2 है, तो वो दोनों पार्टिकल्स अगर टच करते हैं एक दूसरे को, तो ऐसे हालत में क्या हम कहेंगे, उनके बीच में फोर्स कितना बनेगा और उनके बीच में डिस्टेंस कितना बनेगा? क्या जीरो बनेगा? नहीं. इस ऐसे केस में हमको ये जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स जो है, तो वो डिस्टेंस मतलब यहाँ पे उनके सेंटर के बीच में का डिस्टेंस कंसिडर करना होता है. ये देखो, ये सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमको यहाँ पे लेना होगा जब ये पार्टिकल्स दोनों टच करेंगे एक दूसरे को एक्सटर्नली. अगर सरफेस उनके टच करते हैं तभी भी सेंटर तो टच नहीं कर रहे, तो इसलिए r कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, r विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, नेवर. it will become zero only when the two particles just coincide. अगर दोनों पार्टिकल्स कोइंसाइड हो जाते हैं ऐसे, अगर ये पार्टिकल और ये दूसरा पार्टिकल, अगर दोनों का सेंटर एक ही हो जाता है, तो इसी केस में सिर्फ हम बोल सकते हैं कि r becomes zero. So but in the case when the two particles just touch each other externally, r is not going to become zero. ये अच्छी तरह से याद रखो. ठीक है, so this is the Newton's law of gravitation, and the vector form of Newton's law of gravitation can also be put here. How can we put this Newton's law of gravitation in vector form? So suppose this first particle is of mass m1 and the second particle is of mass m2, and suppose that this particle, first particle, exerts a force on the second particle in this direction which is given by r12 bar. ये जो वेक्टर है तो इसको हम बोलेंगे r21 cap. ओके, ये जो है, this is the vector from m2 to m1, that's why it's denoted by r21 cap. Okay, and another vector which is directed from 1 to 2 will be called as a r12 cap. Yes, now we already seen that this first particle exerts a force on the second particle in this backward direction, and this force will actually be called as the F21 bar, correct hai? And the force acting on this first particle due to the second one will be actually directed in this direction, and it is denoted by F12 bar. 1 मतलब 1 के ऊपर काम कर रहा है और due to 2, तो इसलिए उसको F12 bar बोल देंगे. So we can see that this F12 bar is in the same direction as that of R12 cap, right? So we can say that F12 bar is actually G M1 M2 upon R square into R12 cap, correct है? ये उसका वेक्टर फॉर्म हो गया, देखो ठीक से. And at the same time, this F21 bar is going to be in the same direction as that of this R21 cap, right? So we can say write that F21 cap, sorry, F21 bar is actually going to be equal to magnitude, which is Gm1 m2 upon r square as it is multiplied by r21 cap, no doubt. So this is the vector form of this law, Newton's law of gravitation. And since we can see that this r12 cap and r21 cap, they are just equal in magnitude but opposite in direction. So we have that r12 cap is going to be minus of r21 cap. In vectors, we have seen that the vectors which are equal in magnitude but opposite in direction are called as negative vectors. So in the same way here we can say that F12 bar is actually negative of F21 bar. And these two forces are actually the action reaction forces which Newton have talked about
in the third law of motion. You already have seen or heard about the Newton's third law of motion, which tells us that to every action there is an equal and opposite reaction. So we can say that these two forces are just nothing but the examples of action reaction pair. That means, for example, if we consider this earth, okay, earth का जो मास है तो वो हम कैपिटल एम मान लेते हैं, और इसके ऊपर एक सपोज एक बॉडी है, छोटा बॉडी है, उसका मास अगर हम मान लेते हैं स्मॉल एम, ओके, तो इसमें देखा जाता है कि स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बॉडी और एप्पल वी कैन से, एंड दिस इज द अर्थ सपोज. तो अभी इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो हम निकाल सकते हैं आराम से. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और force exerted by earth on the apple will be given by this F, which is going to be, or F12, which we can say it will be G into capital M into small m upon R square, where R is going to be the distance between these two particles, right? This is suppose R. And at the same time, the force exerted by the apple on earth in the upward direction will be given by the similar formula, that is F21 is equal to G M small m upon R square. Again the same thing, the magnitude is going to be the same, but only the difference is that the direction. The force acting on this apple is going to be in the downward direction, but the force acting on this earth due to the apple will be in the upward direction, and both of these forces are going to be the same, no doubt. तो इन दोनों forces का magnitude same है, लेकिन when apple is set free, then apple moves towards the earth and falls back on the earth. This doesn't happen, never happens that the earth just falls on apple. तो उसका reason क्या है कि acceleration, if we see acceleration of the apple, that is A12 we can say, will actually be equal to G M small m upon R square, and that is to be divided by small m. तो ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है तुमको पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होता है. तो एप्पल का एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस फोर्स को हम एप्पल के मास से डिवाइड करेंगे, देखो ठीक से, और अगर अर्थ का एक्सेलरेशन निकालना है तो उसके लिए हम उसी फोर्स को अर्थ के मास से डिवाइड करेंगे. अभी अर्थ का मास तो बहुत बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो बहुत बहुत छोटा आ जाता है, इज ऑलमोस्ट जीरो. ये जो एक्सेलरेशन है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाता है, क्योंकि मास इज वेरी मच लार्ज, mass of earth is very much large, but here in this case the mass of apple is small, and that's why this force is significant and this acceleration is significant, and that's why the apple seems to be falling on the earth. तो ये उसका रीजन है, एक्सेलरेशन उसके लिए बेसिक रीजन है, फोर्स अलग नहीं है, फोर्स इज गोइंग टू बी द सेम, चाहे वो एप्पल के द्वारा अर्थ के ऊपर एक्सर्ट किया हुआ फोर्स हो या अर्थ के द्वारा एप्पल के ऊपर एक्सर्ट किया हुआ फोर्स हो, दोनों फोर्सेस सेम ही है, ठीक है, दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड, बट ओनली द थिंग इज दैट देयर एक्सेलरेशन इज inversely proportional to the mass, and that's why the smaller mass experiences large acceleration and the bigger mass experiences small acceleration or negligibly small acceleration, and that's why we don't feel that earth is moving towards apple due to that force, but actually apple moves towards the earth due to the force. Okay, तो ये अच्छी तरह से याद रखना है. So this is called as the vector form of Newton's law of gravitation. See here, if suppose there are three particles like this, suppose एक m1 मास वाला, ये m2 मास वाला और m3 मास वाला, तीन पार्टिकल्स ऐसे है, ठीक है, और सपोज कि हमको इन तीनों में से कोई भी एक, किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर काम करने वाला फोर्स अगर निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, सपोज इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है तो वो हम मान लेते हैं r12 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर मान लेते हैं r23 है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है तो उसको मान लेते हैं r13 है, ठीक है. तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि दिस मास m1 will experience the two forces, one is due to, देखो ठीक से, ये जो m1 है इसके ऊपर दो फोर्सेस काम करेंगे, एक जो है वो m2 की वजह से जो इस डायरेक्शन में होगा, और m1 के ऊपर दूसरा फोर्स काम करेगा वो m3 की वजह से
जो इस डायरेक्शन में होगा, because this gravitational force always acts along the line joining the two particles. Remember, M2 also will experience two forces. One is due to M1, which is directed this way, and the other one is due to this M3, which is directed in this direction here. Even this M3 also experiences the two forces. One is due to M1, which is directed in this direction, and one other is due to M2, which is already acting in this direction here. So every particle experiences two forces, and now if we want to name them, then we can say this force acting on this M1 due to M2 will be named as F12, okay, and the force acting on this M1 due to M3 will be named as F13, okay. In the same way here, the force acting on this M2 due to M1 will be named as F21, okay. And here in the same way, here the force acting on this M2 due to M3 will be denoted by M23. And similarly, here the force acting on this M3 due to M2 will be expressed as M32, okay. And the force acting on this M3 due to M1 will be denoted by F31. चेक, देखो ठीक से ये सभी फोर्सेस जो है वो इस तरह से है. अभी इफ वी फोकस ऑन सिंगल पार्टिकल लाइक M1 सपोज, तो M1 के ऊपर अगर फोर्स जो हम फोकस करते हैं एट अ टाइम, तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस M1? वी कैन कॉल इट एज F1, okay, F1. And this F1 will be in the direction which is along the diagonal of this parallelogram formed by F12 and F13. Are you getting this? So ये जो F12 है और F13 है, इन दोनों से जो पैरेललोग्राम बनता है, उस पैरेललोग्राम का डायगोनल मतलब F1 होगा एक्चुअली. ये फोर्स जो है तो वो इस तरह से F1 हमको मिलेगा, F1. And how will you find out the magnitude of this F1? If we know the angle between this F12 and F13, and it is suppose theta 1, suppose theta 1 is the angle, then we can say the magnitude of this force F1 can be found out in the using the same formula which we have developed for the finding the magnitude of resultant of two vectors. So it will be, as we know that this magnitude of resultant of two vectors is given by R is equal to root of P square plus Q square plus 2 PQ cos theta, where P and Q are the magnitudes of the two vectors and theta is going to be the angle between those two vectors. So here in the same way we can say that the magnitude of F1 will actually be equal to F12 square plus F13 square plus 2 F12 into F13 into cos theta 1, okay, where theta 1 is the angle between this F12 and F13 vectors. Yes. In the same way here, if we want to find out the force on this particle M2, if we focus on this particle M2 here, then it is experiencing two forces. So both of these two forces will produce a resultant in the direction along the diagonal here. So this resultant will be denoted by F2, we can say, and this F2 can be obtained by using this formula. Magnitude of F2 will be actually F21 square plus F23 square plus 2 F21 into F23 into cos of theta 2, where theta 2 is going to be the angle between these two forces. Yes. And in the same way, we can apply the same formula for M3 also. The force acting on M3 will be expressed as F3, which is going to be actually F31 square plus F32 square plus 2 times of F31 F32 into cos of theta 3, where theta 3 is nothing but the angle between these two vectors like this, and the resultant of these two forces will be along the diagonal again, which is formed by these two vectors F31 bar and F32 bar, correct here. So this will be the direction of F3 in this way. So in this way we can find out the magnitude, and at the same time we have to remember that
here this F12, F13 or F21, F23 and F31, F32 involved here can be found out easily by using the Newton's law of gravitation. So for example, if you want to find out F12, how will you get that? F12 will be actually equal to G into, F12 is the force acting between M1 and M2, right? So we have to use this as G M1 M2 upon R12 square, correct है? In the same way here F13 can be written as, F13 कैसे निकालेंगे? ये देखो, ये F13 is the force between M1 and M3. So we can say this will be equal to G into M1 into M3 upon R13 का whole square. And in the same way here, if you want to find out F23 here, F23, then we can get it as G M2 M3 upon R23 का square. Okay, the distance between M2 and M3 is R23. तो उसका square हमको यहाँ पे नीचे लेना पड़ेगा. In the same way here, F32 can also be written in the same way, and F31 can be also found out in the same way. That is G into M1 M3 upon R13 square. Yes. So this is the basically called as the principle of superposition of the forces. Remember, principle of superposition, which tells us simply that whenever the number of particles or number of masses are interacting between them, then the net force acting on any one particular particle is actually equal to the vector sum of the forces acting on that particle due to all other particles here. तो किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर काम करने वाला फोर्स हमेशा उसको छोड़ के बाकी दोनों फोर्सेस की वजह से, बाकी दोनों पार्टिकल्स की वजह से जो फोर्सेस उस पार्टिकल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उनके रिजल्टेंट के, उनके वेक्टर सम के बराबर हुआ करता है. तो दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एंड वी हैव टू अप्लाई इट इन द न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज हियर इन दिस चैप्टर. चलो ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक हियर विल बी द कांसेप्ट ऑफ critical velocity. Critical velocity. Do you know what is critical velocity? Suppose, okay, first of all, we'll see the acceleration due to gravity. What is acceleration due to gravity? If suppose we have a mass or a body of mass small m which is kept on the surface of earth, तो अगर इस m मास वाला बॉडी अगर हमने इस सरफेस पे रखा है, तो उस केस में हम देख सकते हैं कि अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M है सपोज, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है तो वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, जिसको हम कैपिटल R बोल सकते हैं यहाँ पे. और इसकी वजह से यहाँ पे अगर इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर अप्लाई करो, तो हमको मिलेगा फोर्स बिटवीन द टू अर्थ एंड पार्टिकल ऑफ मास m here will be given by the formula Gmm upon R square, जो कि हमको पता है. But we call this force as weight, right? क्योंकि हमको पता है weight of a body is nothing but the gravitational force acting on the body, correct है? तो weight के लिए हमारे पास already formula है mg, right? But this weight is nothing but the gravitational force acting on this body, which can be found out by the Newton's law of gravitation, which tells us simply that G into capital M into small m upon R square. So that we can just get this small m cancelled from both sides, and what we are left with is simply G is equal to Gm upon R square. Remember, so this is actually going to be the formula for finding the acceleration due to gravity on the surface of Earth. We can also try, because if suppose we take the value of G as 6.67 into 10 raised to minus 11, and the mass of Earth, if we put it as 6 into 10 raised to 24 kilogram, and radius of Earth, as we know, it is 6,400 kilometer. And if we work out all these calculations, then G on the surface of Earth actually comes out to be 9.8 meter per second square approximately. So this is the value of acceleration due to gravity on the surface of Earth, which is obtained from this formula here. Now we'll see, we can say that if we already know the value of the acceleration due to gravity, then why we have calculated this formula? Why we have derived this formula? This formula is derived in order to calculate the acceleration due to gravity on the surface of other planets as well.
सपोज वी हैव दिस जुपिटर, ओके, ये जुपिटर है, तो उसके सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा यहाँ पे, तो वो उसके रेडियस के ऊपर और उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा. सपोज आर जे इज द रेडियस ऑफ जुपिटर एंड सपोज कैपिटल एम जे इज द मास ऑफ जुपिटर, then we can say that the acceleration due to gravity on the surface of Jupiter here will actually be given by the formula, the same formula, that is capital G into M, where M is to be replaced by mj, where mj stands for the mass of Jupiter, and that is to be divided by rj square, where rj stands for the radius of Jupiter. Even in the same way here, if we have the moon, suppose ये moon है, तो मून का जो मास है उसको हम बोल देंगे स्मॉल एम, एम सपोज, एंड सपोज उसका जो रेडियस है उसको हम बोल सकते हैं आर एम. तो उसका जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं, जीएम उसको हम बोल सकते हैं, विच विल बी एक्चुअली गिवन बाय द फॉर्मूला जी इनटू कैपिटल एम एम डिवाइडेड बाय आर एम स्क्वायर. सो हियर एम एम स्टैंड्स फॉर द मास ऑफ मून, ओके, ये मास है मून का, यस. And at the same time, this RM actually stands for the radius of moon. तो इसका मतलब अर्थ का ही सिर्फ नहीं, बल्कि जिस प्लेनेट का चाहिए उस प्लेनेट का हम एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी सरफेस का निकाल सकते हैं आराम से using this formula. Remember, and also we can express this formula in terms of the density here. तो अगर इस फॉर्मूला को हम डेंसिटी के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट है. तो डेंसिटी का फॉर्मूला ही हमारे पास है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो इसका मतलब मास इक्वल टू क्या होगा, मास विल एक्चुअली बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बोल सकते हैं ऐसा. तो ऐसे हालत में मास ऑफ द अर्थ हियर विल एक्चुअली इक्वल टू कैपिटल एम, व्हिच इज गोइंग टू बी एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ अर्थ. अभी जबकि अर्थ स्फीयर है, तो स्फीयर का मास क्या होता है, सॉरी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है हमको पता है ऑलरेडी. वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय द फॉर्मूला 4/3 into पाई कैपिटल आर क्यूब into रो, करेक्ट है. सो ये जो है वो हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम, और ये रो मतलब क्या है यहाँ पे, डेंसिटी है. यस, सो इन दिस वे वी कैन गेट दिस एक्सप्रेशन फॉर मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. And now if we just put this value of mass here in this formula, then we can get another value of acceleration due to gravity in terms of density of earth, that is capital G into 4/3 pi r cube into rho, that is to be divided by r square. But as we already have that this r square and r square will just get cancelled and r will be left in the numerator here. तो यहाँ पे सिर्फ r बचा रहेगा. तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि फाइनली वी कैन गेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी इक्वल टू 4/3 into pi into rho into g into r. So this is the formula for finding the acceleration due to gravity at the surface of earth in terms of the density. Remember, तो ये डेंसिटी के फॉर्म में है, याद रखो इस तरह से. यस, देखो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको अर्थ के अलग अलग पॉइंट्स पे कंपेयर करना है, ठीक है. फॉर एग्जांपल वी नो दैट अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, but it is a ellipsoid like this. It is bulged at the middle and it is flattened at the poles. So we can say that ये poles पे जो radius है वो थोड़ा कम होगा, उसको हम बोल सकते हैं rp, and at the same time the radius at equator is going to be re, which is to be greater than rp. So we can say clearly that re is certainly greater than rp. ये तो हम समझ सकते हैं. So if we check the acceleration of gravity at these points, polar regions here, that is we can call it as GP. And if we find out the acceleration of gravity at these equatorial regions, suppose equatorial regions पे अगर हम acceleration of gravity अगर निकाल के दिखाते हैं, GE उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं आराम से कि mass of earth is the common thing here. Mass of earth is constant, that is capital M here.
So we can say that GP will actually be equal to capital G into M upon RP square, right? And at the same time here GE can be found out to be equal to G into capital M upon RE square. And here we can see clearly, if suppose we take the ratio of GP to GE, then what happens here is GM will get cancelled and this RE square will just go up. So इसको हम लिख सकते हैं RE square and here it will be RP square. And finally we can just take this square common and say that this will be, अगर इस स्क्वायर को अगर हमने कॉमन ले लिया तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट का होल स्क्वायर, है कि नहीं? अभी इसमें देखो ठीक से, सिंस RE is greater than RP, so what we can say that this RE upon RP is going to be greater than 1. So at the same time this ratio GP upon GE will also be greater than 1, which proves that GP has to be greater than GE, which means that the gravity at these polar regions is always greater than the gravity at these equatorial regions. Equatorial region में जो gravity है, acceleration of gravity है, वो होता है almost 9.7 या 9.75 के आसपास, देखो ठीक से, जबकि polar region में जो gravity होता है तो वो होता है almost 10.2 या 10.1 के आसपास. तो सोचो, तो ये फर्क पड़ता है. That is because of the not spherical shape, unspherical shape of the earth, ellipsoid shape of the earth. जो पार्टिकल, जो पॉइंट्स सेंटर से दूर है तो वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जरूर कम होगा, फोर्स भी जरूर कम होगा ऑब्वियसली. और जो पॉइंट्स सेंटर से नजदीक है तो वो पॉइंट्स के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जरूर ज्यादा होगा, सीधी बात है. तो इसलिए we can say that एक लाइन में हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि since this equation tells us simply that G is inversely proportional to R square, what can we say is, and since RE is greater than RP, so GE must be actually less than GP. ऐसा बोल सकते हैं. देखो G का जो वैल्यू है वो रेडियस के ऊपर, स्क्वायर के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करता है. तो जब कोई चीज एक दूसरे के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करता है तो उसके बारे में क्या होता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा. तो जबकि यहाँ पे इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है पोलर रेडियस से, तो इसलिए फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर रीजन विल बी लेस देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोलर रीजन्स हियर. तो पोलर रीजन्स पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ज्यादा क्यों होता है, समझा ठीक से? क्योंकि पोलर रेडियस कम है और पोलर रेडियस कम होने के कारण ही पोलर रीजन में एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ज्यादा है, और इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा होने की वजह से इक्वेटोरियल रीजन्स पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम है. तो दिस इज द थिंग यू हैव टू एक्सप्लेन. अभी एक दूसरा चीज देखो ठीक से, यहाँ पे देखो अर्थ के ऊपर ही अगर हमने सपोज कंसिडर किया तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि उस केस में मास कांस्टेंट है, करेक्ट है? जी तो है ही कांस्टेंट बट मास इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड आर. बट इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द टू प्लैनेट्स, समझो एक अर्थ है हमारे पास, ये अर्थ है, एंड सपोज वी हैव दिस प्लैनेट मून. ओके, तो अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी ज्यादा होगा या मून के सरफेस पे ग्रेविटी ज्यादा होगा? या उससे भी आगे जाके अगर सपोज हम जुपिटर की बात करते हैं जो कि बहुत बड़ा है अर्थ से, तो उसके सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या अर्थ के या मून के, कहाँ पे ज्यादा होगा? Obviously we have already proved that, means practically it is observed that the gravitational acceleration at the surface of Jupiter is very much greater. So you can say that the gravitational acceleration at the surface of Jupiter is greater than the gravitational acceleration at the surface of Earth, which is in turn greater than the gravitational acceleration due at the surface of the moon. Why is it so? Because रेडियस जो है, तो रेडियस जो अर्थ का, तो जुपिटर का जो रेडियस है वो बहुत ज्यादा है, अर्थ का रेडियस थोड़ा उससे कम है.
आर ई उसको हम डिनोट करेंगे। और तीसरा मून का जो रेडियस है वो तो सबसे छोटा है, इसलिए अभी देखो यहाँ पे आर जे इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन आर ई, which is going to be greater than the rm, and hence we can say that this gj is greater than ge and greater than gm। इसका रीजन है, इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। हियर वी कैन सी दैट इफ दिस 4/3 एंड पाई रो जी अगर कांस्टेंट है, so we can find that this g is directly proportional to r, not this here। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, g is inversely proportional to r square, but this is only when mass is constant। मास अगर कांस्टेंट है तभी ऐसा हम बोल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे जुपिटर से हम अर्थ पे चले जाएंगे तो क्या मास कांस्टेंट है, बिल्कुल नहीं। मास हियर इज नॉट अ कांस्टेंट, and since mass is not a constant, we have to use this formula for variation of gravity। तो ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो, क्योंकि अगर मास कांस्टेंट नहीं है दैट मींस डेंसिटी इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। व्हाई, बिकॉज जुपिटर जिस मटेरियल से बना हुआ है उसको मिट्टी पत्थर बोलेंगे, अर्थ भी उसी मटेरियल से बना हुआ है, मिट्टी पत्थर, और मून भी उसी मटेरियल से बना हुआ है। तो आखिर किसी भी प्लैनेट पे चले जाओ, कोई भी प्लैनेट अगर कंसीडर करो तो उसका एवरेज डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज गोइंग टू बी द सेम, बिकॉज डेंसिटी गिव्स अस एन आइडिया अबाउट व्हाट द मटेरियल इज मेड अप ऑफ, कौन से मटेरियल से वो बना हुआ है। ऐसा तो नहीं कि अर्थ लोहे का बना हुआ है और जुपिटर जो है वो चांदी का बना हुआ है या मून सोने का बना हुआ है, ऐसा नहीं है ना। मटेरियल इज ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। एवरेज डेंसिटी इफ यू टॉक अबाउट, हाँ अभी ये बात है कि कोर का डेंसिटी थोड़ा ज्यादा है, क्रेस्ट का डेंसिटी थोड़ा कम है, फॉरगेट अबाउट दैट, ये 2 मिनट के लिए बाजू में रखो, क्योंकि एवरेज डेंसिटी की अगर बात करते हैं, एवरेज डेंसिटी, तो ओवरऑल अगर एवरेज डेंसिटी की बात करते हैं तो अर्थ का हो या जुपिटर का हो सेम ही होगा, ठीक है। तो अर्थ का डेंसिटी और जुपिटर का एवरेज डेंसिटी और मून का भी एवरेज डेंसिटी, it is the average density which is going to be constant here, this is the average density here, and that's why we can say that this g is actually directly proportional to the radius of planet, and that's why we find that जिसका रेडियस बड़ा उसका ग्रेविटी बड़ा, और जिसका रेडियस छोटा उसका ग्रेविटी भी छोटा। ये हमको क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है या ग्रेविटी जो है वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है जब डेंसिटी सेम होता है। तो ये बात हमको अच्छी तरह समझनी है। तो याद रखो ठीक से, whenever we have to talk about the two different planets, we have to use this formula, but if we want to talk about this single planet, then we have to use this formula। ओके, एक ही प्लेनेट के बारे में अगर बात करनी है तो उस केस में हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बट अगर दो अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में हम बात करते हैं तो उस केस में हमको ये बात यूज करनी है कि G is proportional to R। यस one more thing which is worth noting here, चलिए टाइम तो हो गया वैसे, बट चलो ठीक है, जस्ट एक छोटा पॉइंट है वो डिस्कस करके हम लेक्चर एंड करेंगे। यहाँ पे देखो, many of you are just get confused between the concept of mass and weight। Just tell me the difference between this mass and weight, how many of you can? Just type it in the chat box fast, what is the difference between mass and weight, फटाफट। Mass is a constant everywhere, very good Atharv, mass remains constant, weight changes, correct correct, very good। So mass जैसा कि हमको पता है already, yes, mass is पायल, mass is nothing but the amount of matter contained in the body, correct है। mass का definition ही ये है कि the amount of matter contained in the body is called as the mass। But what is weight, what is the definition of weight? The gravitational force acting on the body, yes, very good Atharv।
Again, gravitational force acting on the body is called as the weight. Yes, and here you can see the difference in the formula also. प्रशांत ने बताया वेट का जो फॉर्मूला है वो होता है मास इनटू ग्रेविटी, जबकि मास का कोई फॉर्मूला है ही नहीं, मास तो मास है. इवन इनफैक्ट वेट के फॉर्मूला में ये जो m आता है वो m माना ही मास है, इसको ही हम मास बोलते हैं, याद रखो ठीक से. तो वेट के फॉर्मूला में मास आता है, बट वेट इज द फोर्स एंड मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिकली. चलो ठीक है, और क्या डिफरेंस है मतलब के बीच में बताओ फटाफट. देखिए एक बात कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, डू यू एग्री विद दिस, बट वेट इज अ वेक्टर वन because weight is a force and force is already a vector. Very good, correct. So mass is scalar and weight is vector. Very good. One more difference is that the mass is measured in kilogram. तो मास को जब हम मेजर करते हैं तो किलोग्राम में मेजर करते हैं, जबकि वेट को न्यूटन में मेजर करना जरूरी है. ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, whereas the SI unit of mass is kilogram. Yes. What else? और क्या डिफरेंस है? See, can mass become zero? Can mass be zero? Yes. No. Never mass can be zero. अगर मास जीरो हो गया तो वो बॉडी है ही नहीं, इसका मतलब. यस यस यस, बॉडी विल नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. अगर बॉडी एग्जिस्ट करता है तो उसका मास जीरो हो ही नहीं सकता है. सो मास कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, बट वेट, कैन वेट बी इक्वल टू जीरो? Yes, definitely. Weight can be equal to zero because if no force acts on the body, if we take the body on the in the space, अगर ये अर्थ है और अर्थ से बहुत दूर अगर यहाँ पे अगर कोई बॉडी को हम लेके जाएंगे जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड पहुंचता ही नहीं है, तो वहां पे तो उसका वेट जीरो हो गया कि नहीं? जरूर. वेट बिकम्स जीरो बिकॉज ग्रेविटी बिकम्स जीरो. whenever gravity becomes zero, the weight becomes zero, no doubt. But mass can never become zero. बिल्कुल. एंड इवन मास वेट जो है वो वेट अगर सपोज हम दूसरे प्लेनेट पे चले गए, जुपिटर पे चले गए फॉर एग्जांपल, तो ग्रेविटी विल चेंज, सो बिकॉज ऑफ दैट वेट विल चेंज. सो वेट विल बी डिफरेंट, इट वेरीज फ्रॉम प्लेनेट टू प्लेनेट. तो प्लेनेट टू प्लेनेट ये वेरी करता है, बट मास रिमेन्स कांस्टेंट. चाहे उसको किसी भी प्लेनेट पे लेके जाओ, मास इज गोइंग टू बी द सेम, बट वेट विल चेंज फ्रॉम प्लेनेट टू प्लेनेट. One more thing is that mass is a fundamental quantity and weight is a derived quantity. ये भी तो डिफरेंस है, देखो है कि नहीं? चलो ठीक है. So all these are the differences between the mass and weight, no doubt. So ये कुछ अच्छी तरह से याद रखना है. लेकिन डेली लाइफ के अंदर नॉर्मल जो डेली लाइफ के अंदर हम गलती क्या करते हैं पता है? हम वेट को ही मास समझ लेते हैं. जब हम बोलते हैं ना कि मेरा वेट 70 किलोग्राम है, तो जब हम बोलते हैं कि वेट इज इक्वल टू 70 किलोग्राम, ये बोलना ही गलत है. क्यों? क्योंकि वेट का जो यूनिट है वो किलोग्राम तो किसी भी एंगल से है ही नहीं. वेट कभी किलोग्राम में मेजर किया ही नहीं जाना चाहिए. वेट किस में मेजर किया जाना चाहिए? न्यूटन में मेजर किया जाना चाहिए. लेकिन जब चलो ठीक है कि हर बार 9.8 से मल्टीप्लाई करना और न्यूटन में उसको एक्सप्रेस करना, उससे अच्छा हम जस्ट रफ लैंग्वेज में बिल्कुल रफली हम बोल देते हैं कि माय वेट इज 70 किलोग्राम. उस समय हमको वेट नहीं बोलना होता है, हमको क्या बोलना होता है? माय मास इज 70 किलोग्राम. mass is equal to 70 kilogram. This is the correct statement. This is the wrong statement. Remember. तो मास और वेट के बारे में हम डेली लाइफ के अंदर गलत करते हैं, लेकिन अभी हमने जब साइंस लिया है तो साइंस के अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर हमको इसके बारे में गलत करना अलाउड नहीं है. We are not to confuse between mass and weight. We have to clear note that mass is a different thing and weight is a different thing. So that is what we have to discuss about in today's lecture. Chalo theek hai, so let us stop now, and the next topics we'll see in the next lecture tomorrow.